Hello dear students, once again welcome back to myself Amboya. Today we are going to continue the last section for gravitation class 9 physics. Here we will start through the Archimedes Principle and we will discuss the whole floating body chapter as I told you in part second guys. So here we are going to continue. So let's start this chapter and let's start this video. So first we will see about buoyancy. Buoyancy. Actually, how we can define buoyancy or what do you mean by buoyancy? Actually, buoyancy itself gives a new term which is known as buoyant force. So we will start and see one by one what do we mean by buoyancy and what is our buoyant force. Actually, buoyancy is the ability of all the fluids to oppose the movement, or we can say to oppose the weight of any object. Actually guys, आपको ये सुन के थोड़ा सा डाउट या अजीब लग रहा हो कि how we can define the buoyancy. Actually, buoyancy is a type of, or we can say the ability of all the fluids. All the fluids comes mean that even liquid and even gases also having this ability to oppose the displacement of the weight of particular object. How we can clarify it? Let me clear guys. Suppose we are taking here one beaker. I am taking here one beaker. I am adding here up to this much, suppose 100 ml of water, and I am putting here a small piece of wooden block over here of suppose 10 kg. Suppose I am putting here iron nail or wooden block, anything I can put, and we can see that after getting totally dispersed in this liquid, we will see that when we will measure the weight of this particular object, we will see that there might be certain changes. Suppose there might be 9.8 kg. So we can see that there are 2 kgs of the weight of this particular object is displaced. How and why? Because of the buoyant force applied through or applied by the every fluid whenever we put any object in it. So guys, up to this much, if you are having any doubt, so clarity कर लो यहीं पर, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इससे कुछ terms regarded करूंगा जो कि आपके लिए काफी important होगा guys. So apart from here, we are going to see another example regarding to buoyancy force. So guys, क्या आपको अभी तक clear है कि what do you mean by buoyancy or what is the difference between buoyancy and buoyant force? Now we are going to see how we can give the another term regarding to buoyancy or buoyant force. Actually, buoyant force is how we can say that buoyant force is applied by any liquid or any fluid. Actually, buoyant force is nothing but it is a type of pressure being exerted by every fluid. Fluids come, I already told you, under fluid we can say even liquid, even gas, it doesn't matter. But the main concept is that all the fluids exert a type of pressure on the object which is placed or which is displaced in it, and that type of pressure or that type of force is known as buoyancy force or buoyant force. Now guys, we are going to see in major term is that in which direction the buoyant force is acted. Actually, I told you that I tell you guys, buoyant force is acting in all directions. It doesn't matter even in upward, downward, in every direction buoyant force acts. But there is a system, there is a method, there is a process we can say. What is that? Whenever we are putting any object in a liquid, at that time it experiences the buoyant force in all directions. But if we will displace or if we will keep the object as downward, means that when we will reach the bottom surface of that particular container, at that time we will see the highest amount of buoyant force being acted on the object. The reason is that as the pressure increases or as the depth increases, the pressure on the object which is dispersed in the liquid increases, and because of that we can see the highest amount of buoyant force is being acted on the downward. तो आपको हमेशा याद रखना है guys कि whenever we are increasing the depth of any object under a fluid or any liquid, at that time जब तक कि वो bottom पे रहेगा तो सबसे ज्यादा highest, there we will see the highest amount of buoyant force acting on that particular object. So guys, इतना तो clear हो गया कि buoyant force और buoyancy होता क्या है. अब हम लोग जानने वाले हैं guys. Now we are going to see about the factors affecting the buoyant force. First we will see the liquids only, because here guys I am going to start the floating body chapter. There we have to use only liquid and we have to consider even gases also, but I will tell you regarding with liquid only. So guys, we are going to see the factors affecting buoyant force. So guys, finally we are going to see factors affecting buoyancy or buoyant force. Actually, there are two factors which affect the buoyant force of any fluid. Actually, the two factors are very, very important that we can see even in our natural surrounding also guys. So first one is volume, second one is
density. Actually, volume and density, these two terms are already known to us, guys. How we can define volume? Volume is the space covered by any three-dimensional figure, is known as the volume. Whereas the density tells us how many amount of matter are being put in a small unit of volume of any object. Guys, यहाँ से clear हुआ कि हमारा density and volume होता क्या है? So first we are going to see how volume affect the buoyancy force or buoyant force acting on any object. Actually, guys, हमेशा याद रखना कि जितना surface of the object is, how it depends only upon the volume, that how much surface of any object is being dispersed under water. Suppose I am going to tell you, suppose I am having one bathing tub over here. Suppose this is our bathing tub. Here whole bathing tub is filled with water. Water is there in the whole bathing tub. Even we can see that now I am going to put here a small coin over here. Suppose this is a coin of 5 rupees or anything you can get. I am going to put here. We can see that suppose we are only putting this a small surface area, or we can say a small volume of the particular coin under this liquid, and we are measuring the force or upthrust being acted upon this liquid. Suppose we can guess here, guys, ये हमेशा मान के चलो यहाँ पे कितना 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स. तो इतना हम लोगों ने we have dispersed only a few amount of the coin in the liquid, and there we can see the 5 Newton force upthrust force is being acted upon this coin. So guys, when we will keep the coin completely filled in this liquid in the bottom level, we can see there we are getting 15 Newton of force. Why? Because of the volume of the container or volume of the thing that we are keeping under the liquid or under the fluid. तो गाइस इतना तो पता होगा कि जितना ज्यादा वॉल्यूम उसके अंदर रहेगा उतना ही ज्यादा बायन फोर्स एक्ट करेगा. आप लोगों ने देखा होगा कि शिप्स होते हैं, शिप्स, लार्जर शिप्स, दे आर हैविंग मच मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू स्मॉल नेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट ए लार्ज अमाउंट ऑफ बायन फोर्स इज always acting on the surface of the boat and making it float on the surface of the sea. तो आप लोगों ने तो नोटिस किया गाइस कि कितना ज्यादा वॉल्यूम होता है, और यही कारण होता है कि वहां पे बहुत अमाउंट ऑफ हायर अमाउंट ऑफ हमारा बायन फोर्स एक्ट करता है. The second thing that we are going to see about density. Actually, density matters a lot in case of the containing things, or suppose we are taking here fluid. Actually, guys, हमेशा याद रखना कि density सभी fluids का एक नहीं होता है. आपको मैं बता दूं कि वाटर का density जो होता है वो हमारे मरकरी के डेंसिटी से बहुत ही कम होता है गाइस. MER. गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग जानते हैं, वी ऑलरेडी न्यू दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पुट a small amount of iron nail or a small amount of iron nail in water, then we see that iron nail got dispersed or submerged under the water. But whenever we will keep that even a large amount of iron nail in mercury, there we will see that even iron nail is also floating on the surface of mercury. The reason is that आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा कि वाटर का डेंसिटी से बहुत ही ज्यादा डेंसिटी हमारे मरकरी का होता है, और यही रीजन है कि वो आयरन को भी हमारा फ्लोट कर सकता है. आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा होता है गाइस. एक चीज और हमेशा याद रखना गाइस, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो एक चीज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी हैव टू चेंज दिस 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनटू केजी मीटर क्यूब. सो गाइस केजी मीटर क्यूब का वैल्यू क्या होता है, देखो 1000 केजी मीटर क्यूब. अब इसलिए क्यों होता है, देखो एज वी नो दैट 1 gram is equal to 1/1000 kg. As we know that this the same applying or the same theory we are applying over here, and we know that 1 meter cube is equal to 1 2 3 4 5 6 2 to 4 to 6 centimeter cube. And because of the same thing we are applying here, we can see 2 to 4 to 6 30 cancelled, so we got here 1000 kg मीटर क्यूब. तो गाइस आपको अब क्लियर होगा कि इसका यूनिट क्या होता है. अब चलो गाइस यहाँ तक तो बात आ गई कि मरकरी का डेंसिटी काफी ज्यादा होता है. So guys, always we have to remember two things, that factor affecting the buoyant force is volume and density of the liquid or the container in which we are putting even a small amount of any object. So guys, after this we are going to start our Archimedes Principle, which is going to be so interesting for us. So guys, finally we are going to start our Archimedes Principle topic guys. As we know that Archimedes was a very famous scientist which
who was known for this principle only, Archimedes Principle. And because of this Archimedes Principle, even now in our continuous time, in our present time, we can measure the amount of buoyant force, we can measure the how much amount of or how much shape, and we can say how much weight is required for any submarine fighter jet, so that it can be affordable for us to get, or we can say to float in the surface, on the surface of sea water. एक्चुअली गाइस ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू ही हम लोग को ये पता चल पाया कि हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का हमारे सरफेस के ऊपर, सी सरफेस के ऊपर या हमारे रिवर सरफेस, ग्राउंड वाटर के ऊपर कितना शेप रहना चाहिए, कितना उसका वेट रहना चाहिए कि वो आसानी से फ्लोट कर जाए. सो हाउ वी कैन से आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल गिवन बाय आर्किमिडीज, according to which we are known or we got the information regarding to how much shape is required for any container to be kept on the surface of water. So guys इतना तो clear हो गया. So how we can define Archimedes principle? देखो, Archimedes principle is a principle which tells us the magnitude of buoyant force. याद है आपको, हमेशा ये बात याद रखना कि what is the necessity or what is the importance of Archimedes principle. Actually because of Archimedes principle only we are known about the magnitude of buoyant force acted on the object. हमेशा याद रखना कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द buoyant force applied by the fluid is equal to the weight of fluid displaced by the object, तो गाइस यहाँ से हमें एक चीज पता चल गया कि हमेशा बाइंड फोर्स का उतना ही मैग्नीट्यूड होता है जितना कि हमारा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो एज आई टोल्ड यू, सपोज गाइस हियर आई एम टेकिंग हियर वन beaker and there I am going to put 10 kg of iron nail or iron block, and we can see that कि how much amount उसका weight या बाइंड फोर्स कितना होगा जितना कि वहां पर से लिक्विड डिस्प्लेस करता है. एंड लिक्विड डिस्प्लेस कैसे होता है? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम उस दोनों वॉल्यूम सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाता है गाइस. और यही कारण कि हम लोग को देखने को मिलता है कि राइज ऑफ वाटर लेवल, हमारा वाटर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है गाइस. तो इतना इन्फॉर्मेशन हो गया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूजेस रिगार्डेड टू बायोन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल. यूजेस, क्या क्या यूजेस हमारे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को हम लोग कहाँ कहाँ फॉलो करते हैं. तो फर्स्ट यूज हमेशा याद रखना गाइस, फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, और वी कैन से दैट इन लैक्टोमीटर. लैक्टोमीटर इज द मीटर विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क. एक्चुअली लैक्टोमीटर में क्या होता है कि हम लोग के पास एक कंटेनर रहेगा, देयर वी आर गिवन सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क और the milk is kept under it. So there we use the lactometer, and lactometer actually measures by the Archimedes principle only because it is kept, and according to the density of milk it is correctly measured whether the given solution is milk or pure milk or not. So guys इतना तो क्लियर होगा कि हमारा लैक्टोमीटर में यूज होता है. सेकेंड यूज हमेशा मैंने पहले बताया आपको कि फॉर डिजाइनिंग सबमरीन, फॉर डिजाइनिंग submarine, or design of submarine we can say submarine, or we can say fighter jets, sea fighter jets. तो ये सभी को डिजाइन करने के लिए हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, या आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है गाइस. अब एक चीज आपके दिमाग में आ रहा है, देखो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है गाइस. वेट, या रोहित कुमार इज आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट वेदर आवर gases also applies or follows the Archimedes principle or not. Very good question by Rohit. Thank you for asking this question. I am going to reply it very very clearly because guys most of the students को ये confusion रहता है कि fluid को हम लोग कई बार conduct करते हैं तो हमें liquid क्यों दिया रहता है books में, because whenever we are going through these books there we are only mentioned about liquid. As I told you, fluid contains both liquid and gases. Yes guys, because of the Archimedes principle we can see the floating, or we can say the movement of air balloons in our sky. एक्चुअली गाइस यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्काई में हम लोग देखते हैं हमारे आसमान में कि हॉट एयर बैलून किस प्रॉपर्टी के ऊपर उड़ पाते हैं. आपको पता होगा कि हम लोग वहाँ पे फायर करते हैं, हम लोग वहाँ पे गैसेस को बंद करते हैं, और बिकॉज ऑफ द बाइंड फोर्स ही आप थ्रस्ट वहाँ पे अप्लाई होता है, वे आकाश में लेकर उड़ जाते हैं. वैसे वहाँ पे कोई उसका डायरेक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि जिस साइड वो हमारा अब थ्रस्ट तो बस ऊपर जा रहा है ना. अब ये थोड़ी डिटरमाइन करता है, ये डिटरमाइन करता है फ्लो ऑफ विंड कि द ऑब्जेक्ट विल मूव in which direction, either in our left direction, right direction, or here and there, whenever according to the
flow of wind, it is only determined where the object will go. So guys, this much all things that we have to study regarding to Archimedes principle. And now I'm going to start our floating body chapter, because ये chapter तो आपके बुक में था, इसमें कोई डाउट नहीं है. Now we are going to see about the floating body chapter. Before that guys, before going to see about floating body chapter, let me answer certain questions regarding to buoyant force, or we can see density also we will see over there. So first question, why ships float on the surface of water? This question is very rare and very common. Both can be, you can use either rare and common both terms, because most students will know this answer guys, because ये बहुत सिंपल है, बहुत स्मॉल क्लासेस से हम लोग पढ़ते हैं guys, कि because of the higher density, or we can say because of the vast volume covered by the ship, high amount of thrust is being acted on the surface of ship and it makes the ship float on the surface of water. So भाई इसलिए मत पूछो, कोई और क्वेश्चन है तुम पूछ लो, उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे. Now we are going to see about the term density. First we will go through density, then we will go through relative density. What is density and what is relative density? First, how we can define density. Density is a physical unit which tells us how much amount of particles are being put in how much small amount of area. आपको समझाने के लिए मैंने एक definition दे दिया. अब बुक के लैंग्वेज में क्या होता है? D equal to mass by volume. So we can say density is the unit of 10 by डिवाइडिंग द पर बॉल पर. अब देखो भाई, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिफाइन डेंसिटी ना, यहाँ पे आपको मास नहीं बोल के क्या बोलना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट आर बीइंग पुट इन 1 क्यूबिक मीटर. तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं डेंसिटी को? डेंसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाउ मच पार्टिकल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर बीइंग पुट इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया. तो गाइस या वॉल्यूम बोलो, जो भी बोलो, अब आपको क्लियर हो गया कि ये डेंसिटी होता क्या है. अब डेंसिटी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, द रेट और द वे द यूनिट दैट वी गेट बाय डिवाइडिंग द मास अपॉन वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी. तो ये डेंसिटी तो हो गया. एक्चुअली डेंसिटी का काम क्या होता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली गाइस आपको पता होगा कि व्हेन वी यूज द टर्म डेंसिटी इन आवर फिजिकल लाइफ, वी ट्राई टू मेक इट सम डेंसर. डेंसर का मतलब क्या होता है? देखा आपको सुनाई दिया होगा डेंसर, आप लोगों ने सुना है अपने क्लासेस में, अपने घरों में, कि व्हाट इज डेंसर. वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज मोर डेंसर देन ऑब्जेक्ट. व्हाई? देखो डेंसर का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स एक स्मॉलेस्ट. आपको मैं दो एग्जांपल, सपोज आई एम हैविंग ए स्पॉन्ज ऑफ 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम एंड आई एम हैविंग ए स्टोन ऑफ 5 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम. एक हाथ में मेरे पास अभी, मान के चलो मेरे पास एक स्पॉन्ज है, और एक हाथ में मेरे पास अभी एक ईटा है, या बोलो एक हमारे पास एक पत्थर है. अब यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि जितना जो हमारा वॉल्यूम है, इसमें बहुत ही कम पार्टिकल्स ऑफ दिस स्पॉन्ज अवेलेबल है गाइस एज कंपेयर टू दिस वन. एंड दिस इज व्हाट आवर डेंसिटी. डेंसिटी का यूज हम लोग कंपैरिजन के थ्रू करते हैं गाइस, और यही कंपैरिजन हमें एक आइडिया देता है कि हम लोग का कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस के ऊपर मूव करेगा या फ्लोट करेगा, और कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फ्लोट नहीं करेगा. अब जब भी मैं वाटर का टर्म लूं, आपको हमेशा याद रखना कि आई एम गोइंग टू यूज हियर द टर्म रिगार्डिंग टू फ्लूइड. तो गाइस इतना तो हो गया. अब हमें जानना क्या है कि देखो, अब मैंने आपको पहले बता दिया कि डेंसिटी कितना है वाटर का. डेंसिटी हमारा एक चीज नहीं बताया मैंने कि मरकरी का डेंसिटी क्या होता है. एक्चुअली देखो, मरकरी का एक्चुअली एक्यूरेट डेंसिटी 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है. आप लोग सोच सकते हो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में कितना आसमान जमीन का अंतर है. लेकिन गाइस आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मरकरी से भी ज्यादा डेंसर एक होता है. अब कौन होता है आपने कभी देखा ही नहीं होगा. आपको याद होगा 24 कैरेट सोना गोल्ड, प्योर गोल्ड 19.6 होता है गाइस समथिंग. तो 19 ही मानो, चलो आपको 19 लेके चला मैं आपको बताता हूँ ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. ये जो हमारा प्योर गोल्ड होता है गाइस, वे हमेशा लिक्विड फॉर्म होता है. वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसका डेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि उसमें आप क्या डालोगे आपको कुछ पता नहीं. आप उसमें अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दो ना गाइस, वो हमेशा फ्लोट कर देगा, क्योंकि उसका डेंसिटी इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो. आयरन का डेंसिटी, हमारा कॉपर का डेंसिटी, ये सभी डेंसिटी उसके सामने छोटे बच्चे का ला जाता है. ठीक है गाइस. नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट रिलेटिव डेंसिटी. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? Relative density is nothing but it is the density of comparison with a particular object with the density of water. तो हमेशा याद रखना relative density जहां पर भी आपको मिले तो हमेशा याद रखना density of object as comparing to the density of water. तो हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी रिलेटिव डेंसिटी टर्म मिले तो हमेशा एक चीज हमें याद आ गया कि वाटर वहां पे रहना ही रहना है. तो चलो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं. वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी. सो गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू सी अबाउट रिलेटिव डेंसिटी.
So first, how we can define relative density? As I told you, relative density is the type of density as compared to the density of object with the comparison of water. So we can say yes, relative density is density of object upon density of water. So as we know that density equal to mass upon volume. Mass of substance upon mass volume of substance, V of substance into, अब हमारा ये नीचे आ गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो गाइस ये हमारा वॉल्यूम पर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी गाइस यहाँ पे मास आ जाएगा ना, तो मास ऑफ वाटर. तो गाइस हमेशा एक बार याद रखना कि ये जो हमारा ये कैंसल यूनिट यूनिट कैंसल यूनिट कैंसल, तो जब भी आपको रिलेटिव डेंसिटी मिलेगा वहां पे आपको 1 3 यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलेंगे गाइस. देयर वी विल गेट ओनली the numerical magnitude of any particular object as compared to relative density of water. There we can't see any unit. So हमेशा एक बात याद रखना. Now I'm going to tell you why iron sinks in water. As we know that the density of water is 1 gram centimeter cube, whereas the density of iron is 7.8 gram centimeter cube, and because of that guys, जब हमें इसका रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता है तो 7.8. हमेशा ये एक बात और याद रखना गाइस कि whenever we are using the relative density, there we have to show how much denser any object is as compared to water. So here we got 7.8. So we can say 7.8 times of the, or we can say iron is 7.8 times denser than the water. तो गाइस इतना तो और टॉपिक क्लियर हो गया. अब यही होता है कारण कि हमारा आइस जो होता है फ्लोट करता है हमारे वाटर के ऊपर, क्योंकि उसका डेंसिटी 0.92 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है. सो दिस मच ऑल थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग टू Archimedes Principle. Now I'm going to tell you certain more terms that you will not get in your book, man. So let's start. So guys, at last section of this video, last intermission we can say, we are going to see, suppose we are told to find out the pressure acting on any object when we are shown or when we are given the depth of the object in that particular liquid guys. अगर आपको क्लियरिटी नहीं है तो now I'm going to draw a diagram guys. Suppose we are given here a container of 100 meter height. Height is given over here 100 meter. Suppose we are told that here on 80 meter an object of iron as an iron block is kept over here, and we are told to find out the pressure or upthrust acting on this particular object guys. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, this I am telling you all for solving the numerical questions regarding to the pressure or the upthrust when we are told to find out the upthrust on a given condition of height. तो हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना गाइस, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा. P = HDH. HDG. H क्या होता है हमेशा हाइट, वर्टिकल डेप्थ given here, given how much meter, 80 meter multiplied by density of iron as I already told you 7.8 gram centimeter cube. अभी हमको 80 मीटर दिख रहा है, सेंटीमीटर क्यों दिख रहा है, आपको इसका यूनिट चेंज कर लेना गाइस. एंड वी नो दैट acceleration due to gravity is our 9.8 or we can say here 10 meter per second square. So guys फाइनली इसे सोल्व करोगे तो जो हमारा न्यूटन में वैल्यू आएगा यही हमारा प्रेशर या हम लोग बोल सकते हो कि अपथ्रस्ट या बाइंड फोर्स एक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर गाइस. सो दीज ऑल थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग टू एनी ग्रेविटेशनल फोर्स और वी कैन से बाइंड फोर्स गाइस. तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है. ग्रेविटेशन चैप्टर वी हैव फिनिश्ड एंड इन नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी विल स्टार्ट वर्क ऑन एनर्जी, there we will go through certain examples because most of the students, one more comment is coming. Let me read it. Yeah, Deepak Kumar is asking that, yeah guys, Deepak is asking whether density is always same in the same liquid or not. Actually guys आपका एक क्वेश्चन बढ़िया है दीपक. Now I'm going to tell you, suppose he is asking that we are having one container and we know that this container is filled by water. This container is filled with by water. And he is asking that whether we are putting here one iron block of same mass here over here, same weight 10 gram, and we can see that suppose if the object is kept as same height, तो वहाँ पे pressure same लगेगा या नहीं. आपका क्वेश्चन ये है guys. दीपक से let me ask, Deepak, is your question is this one only? Am I telling you the same question guys? Yeah, he is raising his hand means that the same question he is asking. Actually guys, here we can see it doesn't matter on the depth. Actually we have to mention
इट डजंट मैटर ऑन द पॉइंट। एक्चुअली गाइस तुम यहाँ पे रखो ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखो, हमेशा एक चीज मेंशन करना कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वर्टिकल हाइट हमेशा एक ही जगह पे होना चाहिए। अब आप इस साइड रखो, राइट साइड, लेफ्ट साइड और बॉटम, मिडिल, सेंटर, इधर नॉट बॉटम, either you can keep in center, right side, left side, it doesn't matter, but the magnitude of the pressure or fired force will be same over there, guys. So finally we finish this chapter, guys, and if you are having any more doubts, please go and comment me in the comment box section. Thanks for watching this video, and I'm going to wish you, as today is our Teachers Day, so very happy Teachers Day to us. Meet you all next video. Thanks for watching.